A very good morning, students. Today we'll be starting with the second chapter from our textbook First Flight. Name of the chapter is Long Walk to Freedom, which is the autobiography written by नेल्सन मंडेला. तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का छोटा सा पार्ट हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, where he has described about the inauguration experience of democracy to be seated on the throne of साउथ अफ्रीका. राइट. सो थोड़ा सा वो है, इसमें क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड है. दिस यू ऑलरेडी नो. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, and this chapter basically talks about the inauguration ceremony of democracy. Okay. एंड अपार्थाइड सिस्टम के बारे में बात करी गई है, that how till now in South African soil there was this system of apartheid. What is apartheid? It is the political system which separates people according to their race. Okay, discrimination takes place and on the basis of race के basis पे discrimination करा जाता है. एंड साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था टिल 1994 तक की बात है. 1994 में फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराए गए, एंड जिसमें दिस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस won by more than 50% of the votes, right? It was somewhat about Nelson Mandela's party, African National Congress. They were able to secure 252 out of 400 votes, right? So this is it. You know now what is apartheid. You should be able to tell. It is the political system based on the practice of रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, यहाँ पे एक रेस को दूसरी रेस से सुपीरियर कंसीडर किया जाता है. एंड इन केस ऑफ साउथ अफ्रीका द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज अबाउट white people considered as superior than the people of color. है ना, जो आपके blacks थे या people of color थे, उनसे ज़्यादा superior मानते थे खुद को these white people. So chapter opens when Nelson Mandela is saying that finally 10th of May has arrived. 10th May है आज, and today inauguration ceremony will be held. And he says that आज पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े dignitaries have come here to attend this inauguration ceremony. And he also said कि साउथ अफ्रीकन लैंड पे ये अब तक की सबसे बड़ी वर्ल्ड गैदरिंग है. And he said that he talked about where this inauguration ceremony is about to take place. It was about to take place in sandstone amphitheater. Okay, and sandstone बहुत ही सुंदर सा sandstone का amphitheater था, and it was formed by the union buildings, where in this place called Pretoria. Oh my god, really? I think that's a goat. Yeah, that's a goat. And few kids, obviously. Pretoria. Okay. So and he said that this place Pretoria, this lovely amphitheater, sandstone amphitheater, it was seat of white supremacy till now. है ना, अच्छी building थी, administration related work होते थे. So who are allowed here? Only the white people. And this was the office basically ruled by them. So this used to be the representation or symbolic of white supremacy over the black people. बट नाउ टुडे ऑन 10th May बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा है. So many people are gathered here, and the people of all possible colors are here. You will spot the blacks, the browns, the whites, right? Everybody is present there. Then why they all have gathered there? They all have gathered there because the movement was of such extraordinary merit. क्या होने जा रहा है? डेमोक्रेसी बहुत ही लेजिट तरीके से अपनाई जाएगी, एंड दिस वाज द इनॉग्रेशन ऑफ दैट ओनली. देन
he talks about, hmm, he said that who was he accompanied by on this really good occasion? It was his daughter Zenani. And he also talks about पोडियम पे स्पीच देने वहां पर कौन कौन था. इट वॉज मिस्टर डी क्लर्क जिन्होंने सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे ओथ ली थी. एंड देन देयर वॉज ताबो mbeki which who sown in as the first deputy president. एंड फाइनली नेल्सन मंडेला का टर्न आता है पब्लिक को एड्रेस करने के लिए. ओके. एंड ही सेड दैट in that moment I pledged to obey and uphold the constitution. सबसे पहले तो मैंने एक कसम खाई कि जो हमारा संविधान है साउथ अफ्रीका का, आई विल hold on to that constitution no matter what, and I'm going to devote myself to the well-being of Republic of Africa and its people. And स्पीच है उनकी छोटी सी जो कि पूरी ही आपके सिलेबस में दी गई है, and it's important as well. I'll explain the speech line by line. He started by saying, today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to the newborn liberty. He said, आज हम जितने भी लोग यहाँ पर जमा हैं, हम और आप, हम सब मिलकर के, we will present glory to the newfound liberty of our country. And then he said, out of the experience of an extraordinary human disaster that lasts too long, must be born a society of which all humanity will be proud. He said, बहुत ही लंबे समय तक एक बहुत ही क्रूअल सिस्टम साउथ अफ्रीकन लैंड ने देखा है, द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, एंड इट वाज नो लेस देन अ बिग ह्यूमन डिजास्टर, है ना, किसी बड़े से ह्यूमन डिजास्टर से कम नहीं था ये अपार्थाइड का सिस्टम. एंड ये जो एक्सपीरियंस जो साउथ अफ्रीकन पीपल ने लिया वाइल अंडर इट. एंड देन ही सेड, बट यू नो good things happen after worse things pass. So he said, likewise, अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा which the humanity is going to be proud of. यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब लोग मिलजुल के रहेंगे, and together we all will dream for a better tomorrow. Then he said, we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host of to the nations of the world on our own soil. He said, वी द पीपल ऑफ कलर, हम जो डार्क स्किन पीपल है जिनको अभी तक साउथ अफ्रीका में एक इंसान भी नहीं कंसिडर किया जाता था, लीगल भी नहीं कंसिडर किया जाता था, वी वर कॉल्ड इलीगल इन आवर ओन लैंड्स. लेकिन आज क्या है, हम होस्ट कर रहे हैं, वी आर होस्टिंग दिस गैदरिंग, ह्यूमैनिटी इज गैदरिंग दिस, is hosting this gathering, and that too on our own country. Then he said, we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. And then he thanked all the people who have gathered over there. He said, मैं सबको thank you कहना चाहूँगा, सबको अपने thanks extend करना चाहूँगा, gratefulness extend करना चाहूँगा, because you people have come here to stand with us, to be the spectator of our victory. Victory of what? Democracy. Victory of what? Liberty. Victory of what? Justice. Right. So he said, not only are we celebrating the victory of justice today, but also the peace and the human dignity. Then he said, we have at last achieved our political emancipation. उन्होंने कहा कि फाइनली वो टाइम आ गया है जब साउथ अफ्रीका ने अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली है, इमांसिपेशन अचीव कर लिया है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, and gender discrimination. And he said that not only is this the political emancipation, बल्कि आज समय है कि हम सब मिलकर के कसम खाए that जो जो hurdles को, जो ऑब्स्ट्रक्शंस को हम ओवरकम करके आ गए हैं, उसके बाद भी जो फर्दर चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी, ऑफ डिप्रीवेशन, ऑफ सफरिंग, जेंडर एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हमें उनको भी वन बाय वन क्या करना है, ओवरकम करना है. एंड वी विल बी एबल टू डू इट ओनली व्हेन वी विल बी ऑल यूनाइटेड, आवर एफर्ट्स विल बी कंसिस्टेंट. ठीक है, तो ही इज बेसिकली सेइंग दैट वी हैव कम a lot, we have come really far, but we still have a long way to go still, है ना. पॉलिटिकल इमेंसिपेशन तो मिल गया है, डेमोक्रेसी तो आ गई है, लेकिन नाउ देर आर अदर चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लाइक लैक ऑफ एजुकेशन, deprivation in all possible senses,
है ना, सोशल लेवल पे डिप्रीवेशन, एजुकेशनल लेवल पे डिप्रीवेशन, फाइनेंशियल लेवल पे डिप्रीवेशन, राइट। तो इन सब चीज़ों को भी अब धीरे धीरे ओवरकम करना होगा। देन ही सेड, नेवर, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. And then he said that we as the democratic party of our country will promise, are promising that आज के बाद दिस ब्यूटीफुल साउथ अफ्रीकन लैंड, ये कंट्री दोबारा कभी इस तरीके के हालात नहीं देखेगी जिस हालात से अभी अभी हमारा देश उभर करके आया है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी द्वारा ऑप्रेस नहीं होगी अब, नो मैटर व्हाट। We will, together we all will construct that kind of society where oppression will not take place, where subjugation will not take place. Then he said, the sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. Then he said that, and ये जो लिबर्टी एंड फ्रीडम का सूरज आज उगा है, जो सुबह हुई है, आज़ादी की सुबह आज हुई है, नो मैटर व्हाट, इस सूरज को हम कभी डूबने नहीं देंगे। ओके, this sense of achievement, this sense of emancipation, this victory of liberty, peace and human dignity, it shall remain as it is forever now. और ये किसके हाथ में है? ये साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोगों के हाथ में है। then he said, let freedom reign. अब यहाँ पे कोई गोरा या काला राज नहीं करेगा, rather than who will reign, reign मतलब राज करना, फ्रीडम, लिबर्टी एंड पीस इज गोइंग टू रीन नाउ। अब सिर्फ और सिर्फ आज़ादी का राज होगा। एंड देन ही ends his speech by saying, God bless Africa. In today's video, we'll cover till here only. Tomorrow, we'll cover the other half of the chapter. स्पीच को अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे।